Okay, so now we will solve one question. Find pressure P, absolute pressure we have to determine first in kilopascal, second in centimeter of Hg or sorry oil, and third in centimeter of Hg. So how to determine this? So in terms of kilopascal we can easily determine, I have already told you. So how to determine first in terms of kilopascal. So what we have to do, we have to determine this pressure. So we will equate the level of pressure, sorry, we will equate the pressure at this particular level. So here what will be the equation? So this is P plus this is rho GH of oil, this fluid is oil, is equal to, here we have atmospheric pressure P atmosphere. Why? Because we have to determine the absolute pressure. अगर गेज प्रेशर निकालना रहता then we would not have considered this at atmospheric pressure. Okay, so this will be equal to P atmosphere plus rho GH of mercury. This fluid is mercury. P plus rho GH of oil is equal to P atmosphere plus rho GH of mercury. Okay, so this will be what? So this is P plus rho GH of oil. What is rho of oil? S is given as 0.8. So rho will be equal to 0.8 into 1000, which is 800 kg per meter cube. So this will be 800 into 9.81 into height is 10 centimeter, or you can take it as 0.1 meter. Okay, this should be equal to atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? 101.325 kilopascal into 10 raised power 3 pascal plus rho GH of mercury. Rho of mercury is 13,600 into 9.81 into height of mercury is 0.2. Getting this? Okay, so from here we can determine this pressure, and this pressure will be equal to 127.22 kilopascal. Okay, so this is how we can determine the pressure in terms of kilopascal. This pressure would be in pascal. If I convert it into kilopascal, this will be 127.22 kilopascal. Okay, now second thing, we have to determine the same thing in terms of centimeter of oil. Okay, the reason I am solving this question is कि हो सकता है आपको किसी भी टर्म्स में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने. सपोज आपको सिर्फ किलो पास्कल में बोल दिया, ऐसा तो नहीं कि तीनों एक साथ बोलेगा. हो सकता है आपको सिर्फ किलो पास्कल में बोल दे. हो सकता है यू हैव टू डिटरमाइन दैट द सेम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑयल और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg. ओके, तो वहाँ पर टाइम सेव करने के लिए ऐसा नहीं कि हम सबको किलो पास्कल में निकाल रहे हैं, देन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर ऑफ ऑयल और सेंटीमीटर ऑफ Hg. ओके, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली सेंटीमीटर ऑफ ऑयल या सेंटीमीटर ऑफ Hg में पूछ रहा है तो डायरेक्टली सेंटीमीटर ऑफ ऑयल या सेंटीमीटर ऑफ Hg में हमको निकालना आना चाहिए. Getting this or not? Okay, so how can we determine the same pressure in terms of centimeter of oil? Okay, so in terms of centimeter of oil, here the pressure is P in centimeter of oil. Okay, now the pressure from here to here is 10 centimeter of oil. Okay, this is already in terms of centimeter of oil, is equal to, okay, now here we have the P atmosphere, atmospheric pressure, and atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg. ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को और ये 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg को इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑयल कन्वर्ट करना पड़ेगा. गेटिंग दिस और नॉट? व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डायरेक्टली डिटरमाइनिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑयल. सो हियर वी हैव द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट प्रेशर विच इज इन Hg टू द सेंटीमीटर ऑफ ऑयल. सो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो वी नो व्हाट, एक चीज़ मैंने बताया, व्हाट, rho 1 H1 इज इक्वल टू rho 2 H2 फॉर टू डिफरेंट फ्लूइड्स. Okay, or you can say rho into H for oil is equal to rho into H for mercury. Okay, so if I want to determine the height in terms of oil, so this will be equal to rho of Hg into height of Hg divided by rho of oil. Simple. Getting this or not? और सेम चीज़ अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ Hg मुझे निकालना है तो H इन टर्म्स ऑफ Hg विल बी इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इनटू H ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाय रो ऑफ Hg. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डायरेक्टली. ओके, नाउ यू विल सी दैट हाउ इजली वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस. ओके, सो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं? सो द इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑयल, how can we solve this? So this will be P plus 10 centimeter of oil, okay, is equal to, here we have P atmosphere which is 76 centimeter of Hg. So if we want to convert it in terms of centimeter of oil, so 76
centimeter of Hg. So what can we write? As I told you, H is equal to SSG HHG upon rho oil, sorry, rho Hg HHG upon rho oil, or this can also be written as SSG HHG divided by S oil. Getting this or not? In terms of specific gravity. So this will be equal to what? 76 into S of Hg, which is 13.6, divided by S of oil, which is given as 0.8. Getting this? Very simple to convert. Plus we have 20 centimeter of Hg, so this will be again 20 into 13.6 divided by 0.8. ओके, मतलब जिसके टर्म्स में करना है वो नीचे आ जाएगा और सेकेंड फ्लूइड जो है वो ऊपर आ जाएगा. जिसके टर्म्स में वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ ऑयल, सो ऑयल की हाइट नीचे, सेकेंड फ्लूइड ऊपर. गेटिंग दिस नॉट? सो डायरेक्टली यहाँ से जो आंसर आएगा P इज इक्वल टू 1622 सेंटीमीटर. और ये जो आंसर है इसकी ब्यूटी ये है दैट दिस इज डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ ऑयल. ओके, विथ लिटिल प्रैक्टिस ये बहुत शॉर्टकट है आप लोग के लिए. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलो पास्कल में निकालो, देन दिस P इज इक्वल टू रो जी एच ऑफ ऑयल. ओके, फिर से अगेन इसको कैलकुलेट करो, देन यहाँ से H निकालो. इन स्टेड इफ यू कैन यूज दिस डायरेक्टली विद इन वन लाइन यू कैन सॉल्व दिस थिंग. Getting this or not? Similarly, in terms of centimeter of Hg, in terms of centimeter of Hg, so how can you calculate this in terms of centimeter of Hg? So again same thing. So here we will have to convert this oil in terms of centimeter of Hg. So here we have pressure P first. Suppose that is taken in terms of centimeter of Hg, plus this 10 centimeter is in terms of oil. Okay, so this will be 10 into डिवाइड में कौन सा लेना है, जिसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ Hg इंटू 0.8. सिंपल. इज इक्वल टू, हियर वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ Hg प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg. Getting this? So from here this pressure will be equal to 95.41 centimeter of Hg. That's it. Very simple. Okay, so this is the answer. This pressure can be either 127.22 kilopascal, or in terms of oil 1622 centimeter of oil, or in terms of Hg 95.41 centimeter of Hg. Getting this now? And this was something I was talking of here in terms of oil, because oil की density कम है, specific gravity 0.8 है, so pressure in terms of centimeter of oil is very high. That means अगर हम oil के terms में measure करते हैं, then we will have to use a tube of 1622 centimeter. Getting this or not? और वही चीज़ अगर मरकरी के टर्म्स में मेजर करते हैं, that is 95.41 centimeter of Hg. This is why the mercury is used, as I was telling you. Getting this or not? Okay. Next question, we have to determine pressure P here. What will be pressure P in terms of centimeter of Hg? Okay, so very simple to determine. Here the pressure acting is P atmosphere. Okay, so what we have to do is we will equate the pressure at this level. So here we have P atmosphere is equal to P plus rho GH. Okay, now directly you can determine, or if you want to determine in terms of centimeter of Hg, directly you can determine this. How? This P atmosphere is 76 centimeter of Hg is equal to P, which you have to determine, plus this is 20 centimeter of Hg. So this P from here will be equal to 76 minus 20, which is equal to 56 centimeter of Hg. Okay, so in whatever terms we have to determine, you can directly determine it from this formula. Getting this or not? Okay,